गुड इवनिंग एवरीवन। जो जो जुड़ चुके हैं वो चैट बॉक्स में लिखिए अपना नाम या यस। आज लाइन चार्ट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आपके सवाल उठाएंगे स्टॉक्स के ऊपर। बेटर, आई एम फीलिंग बेटर। थैंक्स वीनू। या अभी ओपन नहीं किया मैंने। ओके, so this is the live session for what we will be discussing is line chart, Q&A, stock pick. We'll see if there is any trade available, and we can discuss on Nifty for rest of the week. जब तक अदर मेंबर्स ज्वाइन करें आप अपने स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं। वेनु, हाउ वाज योर डे? कोई ट्रेड लगा आज ऑप्शन में? एनी स्टॉक यू विश टू नो अबाउट? So I'll remove this. See, this is a line chart as we discussed during our last session. Am I audible? And पेनी स्टॉक के बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, आपको पेनी स्टॉक लेना है, मल्टी बैगर। निफ्टी में अपना लास्ट सेशन में हमने लाइन चार्ट के बारे में डिस्कस किया था कि दोनों की कंपैरिजन में कौन सा बेटर है, कैंडल स्टिक या लाइन चार्ट। और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट है ये निफ्टी की, इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा दिख नहीं रहा कि कौन से दिन की कौन सी कैंडल बनी है, या यहाँ पे कर्व्स जो मूव्स दिख रहे हैं यहाँ पे वो कौन सी डेट के हैं, या उसमें कितना गैप है या क्या, वो कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर इसे हम सेम वापस लेके जाते कैंडल चार्ट पे तो सब कुछ सेम क्लियर दिखेगा, जो हम नॉर्मल डेली बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं कि गैप बनी, कैंडल इतना ऊपर गया नीचे आया, विद इन द डे क्या बना। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीपली अगर कुछ काम करना है तो ये कैंडल चार्ट होती है। अगर हमें सिंपल वे से उसको मेक आउट करना है या समझना है तो उसके लिए लाइन चार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड है ये। ठीक है,
आपने जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ये पोएम किसको याद है? बताइए। बचपन में पढ़ी थी ना हमने। Screen is not visible. Why? It is already shared. Let me just close it. Let me close it once and then restart. Check. Is it visible now? Vinu, just reply in the chat box if the screen is visible. Okay, fine. So ये लाइन चार्ट है और हमने जैक एंड जिल पोएम बचपन में पढ़ी थी। याद है किसी को? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, फिर क्या हुआ? ठीक है। यहाँ पे कुछ यही हमें दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैक एंड जिल हमें याद आएगी। दिस इज बेसिकली over here we see all the tops, over here we see all the bottoms, right? Now let's name them as mountain and valleys. In the line chart we normally address them as mountain and valley. अगर ऊपर जा रहे हैं तो this is a mountain, if we come down it is a valley, right? These are valleys. ठीक है। जहां जहां ये छोटे छोटे कर्व्स बनेंगे नीचे की तरफ, दोज आर वैलीज एंड ये माउंटेन्स है। ठीक है। लाइन चार्ट में जहां पे भी आपको ये टॉप दिखा, दैट इज अ माउंटेन एंड दैट इज कंसिडर्ड एज रेसिस्टेंस पॉइंट, रेसिस्टेंस जोन। ये प्राइस एक्शन यहाँ पे ऐसे काम करेगी। और नीचे वैली बनी तो इट इज अ सपोर्ट जोन। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ लाइन चार्ट। सो स्क्रीन एंड ऑडियो इज ओके, राइट? So these are mountain and valley. We can understand the resistance and support zones by way of tracking them. If we track these mountains, we come to know these are resistance zones, and valleys over here are support zones. Very simple to understand by way of line chart. Okay, am I clear? Chat box में बताइए। This is in continuation with our last session for this line chart. Regarding this line chart, we have discussed already. This is the continuation, second session. Is it clear? Can we move ahead? Chat box में बताइए। Okay. So any dip over here, formation of valleys, and continuation at the same particular zone, wherein you cut even the mountain with a valley, that is a strong sign of either support or a resistance. ठीक है। The way we look at this particular zone, these are mountains. Yeah, this is a valley, this is a mountain, and it goes across until here and turns into a valley. So this is a particular zone where it is cutting multiple mountains and valleys. Yeah. So 24,850 odd would be our major support if we are coming downwards. This is the way we look at it. Likewise, if we move ahead at the top, anything cutting in the same range, like this way, like this one, mountain, valley, and then valley. Okay. So this is also an important zone, and we saw a reverse recently, which was 13th, right? So this is
24 467. If you remember, in the community I have posted as a support for Nifty at 25 477 level. This is the level. Again, I'll tell you, these are not exact plotting. These are just references how we can plot them. Okay, with some confluence, we can come to exact or accurate levels. Am I clear? Is this concept clear? Okay. So this is about line chart. Line chart is easy way of understanding how market is behaving, or we can come to some conclusion referring to the old history as we always do for any chart to understand and expect, or okay. Let's move on to your Q&A. If you have anything to know about your stocks, you can put in the chat box the name, and then we can discuss on that particular stock. Else we can move to our stock pick. ओके, आप लेट आए, क्यों? यहाँ पे लाइन चार्ट के बारे में तो डिस्कशन हो गई। आपने इसको पूरे तरह से मतलब क्या बोलूं मैं, जूस निकाल रहे हो गॉडफ्रे फिलिप्स की। 20% अप था, अच्छा है ना? आपने तो ऑप्शन ट्रेड लिया होगा, कितना पैसा बनाया वो बताइए अभी। और मिठाई कब खिला रहे हो? पिछले तीनों सेशंस में आपने इसके बारे में पूछा है और ये वर्क कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए, पैसा बना कि नहीं बना फिलिप्स में? 2270 की बताई थी शायद, मुझे याद है आपको लेवल। एक रेसिस्टेंस जोन है इसका, ठीक है। उसको तो इसने निकाल दिया और अच्छा ब्रेकआउट दिया है, सुपर सॉलिड ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स। ये तो अभी चलने जैसा स्टार्ट हुआ है ये। मार्केट क्या है, बहुत ही वॉलेटाइल है। कोई भी स्टॉक रिसेंट पास्ट में देखो आप, 2 महीने से कैसे चल रही है मार्केट। कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है एक दिन या 2 दिन, फिर टिकता नहीं और नीचे आ जाता है, सेम बैक टू सेम लेवल्स। तो इसके लिए थोड़ा कंटिन्यूएशन नहीं है, उसमें डर लगता है। जबकि वॉल्यूम्स हो रहे हैं, सपोर्ट मिल रही है, पुश की ऊपर जा रहे हैं, बट वो सस्टेन नहीं कर रहे। तो इसके लिए थोड़ा रिस्की हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली। कैश में तो चलो ठीक है, आपके पास पड़ा हुआ है सामान, माल पड़ा हुआ है, बिकेगा नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है इसकी मंथली। ऑप्शन में तो क्या है कि वो खत्म हो जाएगा महीने के आखिर में। तो ये रिस्क होती है, इसीलिए आपको जो मिलता है ऑप्शन में आप उसको ले लो और मूव करो आगे, rather than sitting on the same trade in the trade in sitting in the same trade and waiting for multiple gains। तो वो रिस्की हो जाएगा। अगले दिन अगर नीचे खुल गया, अपोजिट डायरेक्शन में खुल गया, तो आपको वो पूरा निकल जाएगा जो बन रहा था एक दिन पहले। ठीक है ना? यही मैं सब्सक्राइबर्स को भी ऐसे ही गाइड करते हैं हम, उनको प्रॉफिट बांधने के लिए बोलते हैं और लेवल्स दिए रहते हैं, तो यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू विद इन दैट रेंज। Yes, Vinu agrees with me. Vinu is happy with his P&L. Correct? Market is very volatile. Yes, one day stock is going up, other day it is coming down, even after giving a breakout. Sustain नहीं हो रहे।
ये गॉडफ्रे फिलिप्स तो अच्छा उसने ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी हो रहा है। अभी नेक्स्ट लेवल आपकी क्या बनेगी? आज की हाई को निकाला तो फिर 100 रुपये मिलेंगे यहाँ से। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, हाँ, 2477 ट्रेडेड प्राइस है LTP, और लगभग 100 रुपये मिलेंगे फिर आपको यहाँ से, अगर ये कल चला तो। ठीक है, ये चलेगा। अभी अच्छा जोन में आया है, ये पॉजिटिव जोन में आ चुका है ये। हाय हाय। और कोई स्टॉक्स आपको डिस्कस करने हो तो आप चैट बॉक्स में नाम लिखिए, हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज वी विल मूव टू पिक ऑफ द डे। ठीक है, वी नो हाउ वाज योर डे? ओके, सो इट इज Heritage Foods is the stock for the is the stock for the week, we can say. या क्यों नहीं रहा? ठीक है, बुरी तरह से पिटा है ये, दिख रहा है। हेरिटेज फूड, गुड कंपनी, again very bad shape. 725 was the high, all-time high, and it is currently quoting at 15% 50% discount. 354 is the last traded price. ठीक है, ये यहाँ पे again we can see, if we convert to our line chart, see this mountains and these are valleys. So it is in a good zone, support zone, currently trading and in the support zone. If at all it breaks from here, it can go to this next zone, which is 320 odd, and the final would be 300 300 level, 297 300 level. This is the level where you can, till this level you can accumulate. Okay, it is more of positional trade with a good return ratio, and with a very tight stop loss. Probably 280 levels would be your stop loss. Buy on dips till 300 or 335 odd, and wait for the reversal. It will come and it will shoot up. First target we see here is roughly 450, which is 100 rupees from CMP. And if it is coming down, it will be higher. The profit ratio will be better. And it could go till 500 and above 525. So this is the trade for the, not for the week, but for a positional trade. You can keep on accumulating on dips, right? Make a note. So reversal move from 330 odd, it will be 375, 400, 425, 450 also probably, right? So 20, 25 rupees moves until 500. This is your pick of the day. Make a note, and we move to your QA. Very good evening, sir. Nataji, how are you? So your suggestion worked. Evening time. We know Union Bank. Okay.
fresh high. Now this is blue sky zone, as we all know. So here I need to check my setup first. 193 is last traded price. 193.11. It has actually it crossed its resistance of 189. Okay, and next resistance is approximately near 205 levels. Blue sky zone, we all know, no guarantees, but as such, if we see old records, yeah, 205 odd would be the next level, resistance level. TSL is must, as always, as I always say. You don't, you know, lose on your profits. Maintain TSL and ride the trend. Nataraji, your stock, you wish to know about anything, any of the stocks? Please check about Bank of India today. Look out the previous resistance. I gave it. I remember I gave this trade in the community Bank of India. Yeah, it gave a fresh breakout. I said about X price you can get into long position. I do remember probably I yes it has crossed. It has given a fresh breakout. Yes. So 172.55 is the last traded price for Boy, Bank of India. 179 is the next resistance. Yes, 179 is next resistance. So you have around 6-7 rupees to go from LTP, and it is a very good derivative based stock. I think if I'm not wrong, I have given to somebody whether in the community or personally. And I have already received a profit booking screenshot today itself for Bank of India. But yes, 172 is the last traded price. Very tight stop loss of 170 and maintain TSL if you are holding the position until 179. What is the lot size for this? No, I don't find via Fibonacci, but I have my own setup as you probably know it very well because you are following me since now almost 2 years. So no, I don't. I have my own setup. I don't follow Fibonacci in particular. You tell me, are you happy with the levels you I provide you overall via community or subscriptions or any other manner? Is it working or no? That's more important.
Bank of India lot size is 5,200. So any single even 50 paisa move gives you 2,500 rupees gain in the via options. It's a good stock, good momentum currently, and yes, ready to move probably. Yes, your resistance level really works. Thanks. Any other stock you wish to know about the levels, or I've already shared pick of the day, which is positional trade. It will give a good return. Once this session ends, live session ends, the video will be uploaded. You can, if at all you missed, you can watch that video. Do comment and like, share as usual. All right, I feel let's close it for the day. Thank you for joining. God bless.